So I'll get back to the original point that it appears very factual as you asked, but you don't need to mug up everything. Let the entire duration of the module get over. Go through all the things one by one. Just understand what these things are. In the second round, when you start reading them, again you will come to know what to remember, what not to remember. By that time, you will have two things. Firstly, an overview of the entire syllabus and all the content, and secondly, we would have started solving questions at much higher frequency also. ठीक है, वो एक हो गया. दूसरा था टुडे विल स्टार्ट विथ टेम्पल आर्किटेक्चर. वी हैव सो फार फिनिश्ड स्तूपा, रॉक कट इन चैत्य विहारा एंड रॉक कट इन हिंदू जैन. We will do temple for 2 days again. Temples have been one of the very popular topics among the previous year questions. And temples are generally, as we all know, divided into Nagar, Dravid and Vesar. But it is not so very simple and it is not so very straightforward. There are multiple ways of classifying temples and there are multiple formats even inside these three generic categorizations. We'll go detailed, but do not get afraid again by all the new facts and cities and kings and temples, and this will go across India in next 2 days and will go across India again in next further 2 days. In next 2 days we'll finish Nagar, Dravid, Vesar. We'll see all parts of India and the regional specificities of all the temples. Then we enter Indo-Islamic era, in which Delhi Sultanate and Mughal and other regional aspects, we will again visit all the Indian and regional parts. So you will get a lot of new facts. Many of these sites are UNESCO World Heritage sites. Many of these are culturally very important, and if you come from specific region, for you these are very obvious sites. But on the other hand, for people from the other regions, they have no idea of these sites, and vice versa. So all of you will feel home in certain part and outside home for rest of India. That is second thing. Third thing is what you need to remember in this portion is not the specific technological aspects or technical terminological things that we'll discuss. You can look at the history of temples, temple architecture in multiple ways. One is as the religion develops, we have subsidiary and supporting temple architecture developing to subserve the needs of religion. So you have various parts, that is one thing. So we will see some bits and pieces of that religious text as well, but that is not so primary. Secondly, we will use a lot of technical terms. This will help you to understand and appreciate the evolution and therefore help you to remember things very quickly, but you do not need to remember those technical words. Do not get afraid. Okay. Thirdly, behind the regional developments of temple architecture, there is always a political narrative. Some dynasty comes, then it patronizes something, some ideology comes and all these things. So this political background is also not very primary for us to be remembered. I will keep mentioning it at bits and pieces, so as to give you a narrative, but you do not need to remember that as well. The questions that have been asked are location questions, deity questions. कौन सा भोंगा टेम्पल कहाँ पे, सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ मिलता है, मैच द फॉलोइंग पेयर्स, location and name of temples, all such kind of, then the question becomes very factual. But if we understand the narrative of the evolution of temple architecture, it will become very easy for you to either answer the question or guess the answer. ठीक है? And we are purposefully going one step further than required for UPSC, so that if you get accustomed to that level, it becomes easier to come one level back, revise, understand and solve the questions. ठीक है? So with that introduction, opening remarks, we'll start. So these are some basic things we'll begin with. Firstly, we're talking of temple architecture beginning from the Gupta period. It does not mean that there were no temples before Gupta. They did exist, but the bhakti movement, the devotionalism that started, the Puranic Hinduism, is at around, it starts reaching its peak around Gupta and onwards. तो टेम्पल यहाँ पे बहुत पॉपुलर होना शुरू हो जाते हैं. We also have simultaneously the zenith of Buddhist culture in the Gupta period only. तो ये एक बात है. So we have all the Puranas being written now, Brahma, Vishnu, Shiva, and there are many Puranas, Mahapuran, Padma Puran, Bhavishya Puran, this Puran, that Puran. So we have various motifs and sects for which you can build your temples.
and you have Ramayana Mahabharata reaching its fullest form in this time. You know, these are accretion over the centuries which led to these final versions of books. So they formed or they attained their fuller form in Gupta period and little bit afterwards as well. Second thing is, striking feature of Hinduism is aesthetic vision of divinity. The gods themselves, as I said in the previous lecture, dance. Nataraja dances. We have 7 types of Tandava dances: Ananda Tandav, Nadanta Tandav, Raudra Tandav, Kalika, many Tandavas are there. So Nataraj does one Tandav, Bhairav does another Tandav, many Tandavas. So Shiva dances. Vishnu we know, he dances when he wants to kill Bhasmasur, Mohini Attam. It's not Mohini Attam but Mohini Swarup, then Mohini Attam name comes from there. Mohini Swarup of Vishnu. We have Krishna doing Leela, Ras Leela to hai hi apne paas. UPSC even asked question on these two things. UPSC asked in main specifically about Tandava in inscription, Tandav dance and its forms. UPSC has also asked questions a few years ago on flute playing Krishna's theme in Indian art. May it be painting, may it be sculpture, may it be architecture, whatever. UPSC has picked this thing. Anyway, yes? Okay. And second thing is that as Puranic Hinduism spreads across India, it assimilates various local cults and local religions, so to say, and therefore we have the pantheon of God enlarging. Many new gods and goddesses are coming into the fold of the great tradition. And so we have this accretion of godheads as well, which provide a lot of ideas and narratives for sculptural activity and also purpose and intent to build temples. There is third factor, that is emergence of local regional polities. It is the same time in post-Gupta era you see development of Indian languages, development of local regions and principalities, development of local cults, bhakti and temple architecture. So it's the regional cultural unit that is taking shape in this time. May it be Gujarat, that starts taking shape from this point onwards, and it goes to early medieval, and at the other end of the early medieval in 12th 13th century we see them coming into being. So ये 500-600 साल की प्रोसेस है, इसमें इंडियन रीजन्स आर गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है, and temple is one manifestation of that. That's why we have so much diversity of temples. It is very difficult to categorize them as well. This Nagar, Dravid, Vesar is the categorization given by not any modern thinker. This is given in Indian ancient texts, but this is not completely true as well, because we have many temples of Nagar in south and Dravid somewhere in north as well sometimes. So it is a stylistic differentiation and not necessarily geographic differentiation. You need to keep that in mind. Although geography and style coincides to 99.9% extent, there is some difference. In Delhi only, if you go to south of South Delhi, there is a place, I do not recall its name, there are 5 temples there, and these 5 temples we built 20, 30, 40 years ago, and you find all the 5 styles of temples there. We have Nagar, we have Dravid, we have Vesar, we have Buddhist style, we have Rajput style, Mughal style. There are 5-6 structures over there in the same complex, and there is no single board telling that it's a diversity they are showing there. Nobody knows, just go there, people go and pray and come back. Anyway, material. So we have also the diversity of material form. May it be brick or stone, and then even in stone we have immense variety. We have already seen how the stone affects the quality of sculpture when we saw rock cut architecture. Here also stone has a lot of role to play, but we don't worry about the structural engineering part in this course. Building method. Placing dressed stones horizontally, since mortar was rarely used. So stone dressing was very important aspect. Patharvat. So you take the stone, you dress it, you chisel it, you make it of perfect shape and size, and then such hundreds of stones are put together later on, and then they just put together with interlocking. If you go to Odisha, you have iron bars and iron plates in between which hold them together sometimes, but we generally did not use mortar. So stone dressing, an art in itself, is a very important art for Indian temple architecture, although it comes not in architecture, but it is actually a sculptural thing rather than architectural thing, but this is fused. Let us go ahead. Then how can you classify temples? As I said, the classification is sometimes ancient in given Agama texts or other texts, and sometimes it is modern. You have various ways. You can divide temples based on
deity. Shaiva temple है या विष्णु temple है. Surya temple UPSC already asked. In which of the following places there is sun temple found? And they gave list. Sun temple is generally rare. Sun and Brahma temples are not very popular or not very numerous. So sun temple का typical UPSC सवाल already पूछ चुकी है, 3-4 साल पहले ही पूछा था. So you can classify temples based on deity. You can classify them based on shrines. Yesterday we saw in rock cut architecture, some rock cut caves had more than one shrine in that. 1 shrine, 3 shrines, 5 shrines, etc. So you can divide them based on that as well. How many shrines are there inside the temple? You have plan. You understand plan? Top view. Plan. So plan can be octagonal, square, stellite or star shaped, and there are multiple others. So there are various types of plans as well, and you can divide temple even based on that. There is Pradakshina path. This is a typical UPSC question or NCERT question. People generally remember this very easily. Sandhar, Nirandhar. तो संधार इज स आधार, निरंधार इज विदाउट अंधार. सिंपल बात यह है कि एक में प्रदक्षिणा पाथ है, यू कैन गो अराउंड द टेम्पल, एक में नहीं है, सर्कम एम्बुलेशन. ठीक है. तो इफ यू लुक एट द ओल्डर टेम्पल्स ऑफ अर्ली गुप्ता एरा, जनरली प्रदक्षिणा पाथ नहीं होता है. ग्रेजुअली इट बिकेम अ नॉर्म. सेकेंडली, प्रदक्षिणा पाथ अगर है तो वो कैसा बनाया है? इज इट जस्ट ओपन प्लेटफॉर्म, एन ओपन प्लेटफॉर्म ऑन विच यू हैव अ श्राइन एंड देन यू कैन गो अराउंड? So that is one kind of pradakshina path, but that is not what is being referred. That is presumed pradakshina path. Now you have a shrine and you have some pathway around it, and out of it you can have walls or pillars at least. Then you have a earmarked pradakshina path. Then that becomes sandhar. ठीक. So you have mix and match of both initially and even later on, but sandhar becomes the norm in later time. It does not mean that Nirandhar stopped being produced. Nirandhar temples are still produced sometimes. But generally pradakshina path hota hai. It gives an example how the ritual form affects the structural form. Then you have number of projections, rathas. We'll talk about in detail, but these are nothing but projections on the walls from outside to have the carvings. जितने उसको रथ बोलते हैं, जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने रथ बढ़ेंगे. एक रथ तो नहीं होता, त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ, नवरथ, various rathas. This is not the ratha structure, this is just elevation and भिंती और भिता जिसे बोलते हैं, दीवार की बात चल रही है. ठीक है. Then your region and style, I told you the difference also. You have 3 शैली, नागर शैली, द्राविड़ शैली and वेसर शैली. ठीक है. Basics are okay. Let us move ahead. It's just a basic difference between Nagar and Dravid. And now when you say we want to compare the styles, how do we compare? For comparison, you have 3 basic elements or 3 basic variables, and these are the most important variables that we'll use for understanding all the temples across the regions. When I have to compare this with this, how do I compare? Rang kya hai? Vazan kitna hai? Size, volume, right? Content. So when we want to compare the structures of temple, we use these 3 things: tower, that is shikhara; elevation, the walls from the bottom till the top, till the tower starts; and ground plan, the plan, shape; and structures if you add newer and newer structures. So I have not filled it. You will come to know why I have not filled it gradually. But the thing is, I just wanted to tell you an idea कि when you compare Nagar, Dravid, Vesar, or even inside Nagar we have various regional varieties. All of these can be explained with the help of 3 basic variables: tower, elevation and ground plan. And this is the scheme that we will use to understand the regional diversity as well. ठीक है. So we'll see the details as we go on. So I won't go through it right now, but you can have the view and pause it and write it down if you want. या है उसमें ऑलरेडी छपा हुआ है. ठीक. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेम्पल प्लान. तो जनरली प्लान में भी और इवन ऑल्सो इन एलिवेशन, बट आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ प्लान हियर, दैट वास्तु पुरुष मंडल इज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन टेक्स्ट्स. दैट दिस एंटायर पार्ट, these are like squares and they have names, and there are also squares inside it which are not shown over here, but this is the plan of the square temple, and it is supposed to be inhabited by the Adi Brahma or Purusha.
ठीक है, तो पूरी की जगह सैक्रेड है. If you remember Buddhist Chaitya, Stupa, they were mostly circular. So in Buddhism, the circle is the most obvious, natural, and most sacred plan, and everything is above that, or extension of that, or elaboration of that. In Hinduism, it is always a square. So basic thing will be square, and everything will be above that, addition to that. So square is the most sacred basic datum unit that we follow in Hinduism. So that is one thing. So when you say that you want to design a plan, you start with square. The second thing is obviously some astrological things. ये वहाँ पे है, वो वहाँ पे है, तो you have some modification in square plan according to that. And then you have some sexual orgy, fertility rites, etc. in Tantrism, for example, that give additional complexity to the temple plan. ठीक है, but there are many more factors. I have just listed 3 here. And this line, gods seeking to impose order in chaos force the primeval man Purusha into a square grid. So it is the basic unit called square pada. This is pada. एक पद, दो पद, तीन पद, अलग अलग पद. It's a kind of geometric thing with some ritual names. That's all. It is a basic geometry which is given names. Don't go into details. Now this is an interesting thing to understand what happens later on. The basic temple terminology. The temple is also called as Devalaya, right? Devalaya, जहाँ पे भगवान का घर है, देवालय. It is also called as prasad. Prasad is nothing but a mahal, a mansion. तो जहाँ भगवान का प्रासाद है, भगवान का प्रसाद है. And because Bhagwan is also treated as a king, or sometimes king is treated as Bhagwan, तो उसकी जो सारी चीज़ें होती हैं, the all chores that king follows throughout the day and throughout the life are also the chores that the god follows. शादी होगी, पूजा होगी, मतलब सो मंदिर के अंदर भी आपको वेरियस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे which will fulfill those functional necessities of God. If example, if you go to South India, you have Kalyana Mandapam. So Kalyan is marriage or wedding. So God comes out, gets married in the Kalyana Mandapam and then goes back. There is in Odisha Bhoga Mandap, जहाँ पे भोग लगता है, सब लोग बैठ के खाना खाते हैं. समटाइम्स यू नृत्य मंडप, सो यू हैव डांस ओवर देयर. सो राजा भी अपने महल में डांस सीखेगा तो यहाँ भगवान के सामने डांस होगा. सो बात यह है कि यू हैव ऑल दिस फंक्शनल ऑक्सिलरी यूनिट्स एज वेल. बट एनीवे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज तीर्थ, होली साइट, बेसिक टर्म्स. Come to the elaborate installation rituals. So we have this in Hinduism defined to the level of obscene details कि कब क्या होगा, कैसे होगा, to install the god afterwards. हर पूजा का हर format is defined. For example, if you go to Pancharatra texts in either Tantrikism or Vaishnava Pancharatra texts, so ritual is very much defined. सुबह क्या होगा, आरती कैसे होगी, 11 बजे भगवान को हम छाल चढ़ाएंगे, 3 बजे फूल चढ़ाएंगे, उसके स्टेप कैसे. सो एवरीथिंग इज इन डिटेल डेवलप्ड, एंड टू फैसिलिटेट दोज प्रोसेसेस ऑफ रिचुअल वर्शिप स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड. ठीक है. देन वी हैव टेम्पल एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन. इट्स अ पार्ट ऑफ नॉट cultural history in this format of architecture, but it's an important thing. You need to understand temple is not only a ritual place, it is also a social space, also a cultural space, also an economic unit. We have temples which own lands. In even Indian constitution we have temples, Devaswam in Kerala accepted as institutions, right? तो टेम्पल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी बात है कि टेम्पल्स एम्प्लॉयड पीपल, टेम्पल्स ओन्ड लैंड्स, temples had educational institutions, temples had managers. It was like a corporate entity that was being run. Temples used to do investment, temples used to act as bankers, temples used to give education in dance, drama, music, culture. Temples used to organize local fairs where people used to come annually. So her angle mein temple is like a corporate structure historically with religious sanction and importance of sacredness. तो हमें समझना चाहिए. सो व्हेन यू लुक एट टेम्पल, वी लुक एट द टेम्पल एज एन ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन आज का काम अपना वो नहीं है. टुडे वी विल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल्स. गर्भगृह. सो गर्भगृह इज लाइक वुम्ब ऑफ अ वुमन, गर्भ.
तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टेम्पल का जो है दैट इज गर्भगृह, द सैंक्टम सैंक्टोरियम। इसके अंदर भगवान होगा, मूर्ति होगी, एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम दैट न्यूक्लियस, फ्रॉम दैट डेटम आउटवर्ड्स। सब चीज़ें वहाँ से डिटरमाइन होती है। तो गर्भगृह न्यूक्लियस डार्क एंड सेक्लूडेड, वहाँ भगवान ऐसे न्यूक्लियस डार्क एंड सेक्लूडेड क्यों? बिकॉज इट इज अनमैनिफेस्टेड भगवान। मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट दीज आर रिलीजियस टर्म्स, इमेनेटेड, अनइमेनेटेड एटसेट्रा। तो अनमैनिफेस्ट मतलब जो भगवान ने रूप नहीं लिया है, सबसे ओरिजिनल प्योर रूप, फॉर्मलेस भगवान है, भले ही फॉर्म के अंदर क्यों ना, फॉर्मलेस उसको माना जाएगा, तो अंदर रहेगा, और दैट इज द मोस्ट सैक्रेड स्पेस ऑफ टेम्पल। और जैसे वहाँ से आप रेडिएटिंग टूवर्ड्स आउटवर्ड्स जाओगे ग्रेजुअली, द इंटेंसिटी और द क्वांटिटी ऑफ सैक्रेडनेस विल गो ऑन रिड्यूसिंग। ठीक है, बाय द टाइम यू रीच द आउटर वॉल्स ऑफ टेम्पल, सबसे कम सैक्रेड है वो रिलेटिवली, एंड देन देयर इज, ठीक है। सो व्हेन यू गो इनसाइड द टेम्पल, जनरली यू, छोटी गली रहेगी, अंदर जाके अंधेरा, मूर्ति लिंग बिंग रखा होगा, एंड देन यू अरे क्या दर्शन लिया होगा। तो दर्शन और गेजिंग इज द वे ऑफ विजिटिंग गॉड इन हिंदुइज्म। आप जाके नमस्कार वहाँ करने समय नहीं होता है, भगवान को देखो एंड भगवान आपको दिखेगा, दैट इज व्हाट दर्शन इज, दैट इज द बेसिक फिलोसॉफिकल आइडिया बिहाइंड इंडियन टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स। ठीक है, बाकी सब पूजा अर्चा बाहर करो, मंडप में जाके बैठ के। तो दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसलिए उस तरह का मंदिर, वहाँ पे छोटे दिया अंधेरा जनरली होगा। देन आउटवर्ड्स लेस सैक्रेड एंड दस मैनिफेस्ट डेइटीज ऑन वॉल, ह्यूमन, एनिमल, कॉस्मिक, प्ले, लीला। तो इसलिए इफ यू गो टू खजुराहो फॉर एग्जाम्पल, वी हैव लॉट ऑफ डेइटीज ऑन वॉल्स, क्योंकि वो अब ठीक है, अब डेइटी मैनिफेस्ट हो गई है, अब बाहर तक पहुँच गया, कम सैक्रेड है। देन चूंकि नो, इट्स इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन नागर एंड द्राविड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिफरेंस इन Nagara temples. Because the sanctum sanctorium is the most important part, the shikhara that comes on its top is always the highest shikhara. All the subsidiary parts will also have shikhara possibly, but they will not reach the height of the shikhara which is on the top of sanctum sanctorium. गर्भगृह के ऊपर का भगवान, नीचे भगवान है, उसके ऊपर शिखर सबसे ऊंचा होना चाहिए, that is a basic norm in Nagar style. However, the shikhara is nothing but again metaphorically part Mount Meru or Kailas. If you go to southern temples, the picture reverses. Do you know why? A temple is an institution that went on for centuries. तो जैसे मैंने एक, समझो मैं राजा हूँ और मेरे पिताजी भी राजा थे, so he created one temple, he commissioned and created one temple. Now I have inherited the empire and I have brought even larger glory, more glory to the empire. मैं ज़्यादा empire extend कर लिया, इकोनॉमी और बड़ी, prosperity बहुत ज़्यादा, ताकत बढ़ गई. Now I can go and build another temple. That I also do, but I want to do somewhere here where temple is already there, परंपरा चल रही है. So what do I do? इकोनॉमी बढ़ी है तो पॉपुलेशन भी बढ़ी है, इकोनॉमी बढ़ी है तो लोगों का वहाँ पे आना जाना बढ़ा है, आसपास मार्केट बढ़ा है. तो व्हाट आई वुड बिल्ड वन टेम्पल वॉल, और टेम्पल वॉल को मैं यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा दूंगा, गेटवे, इट इज़ कॉल्ड गोपुरम. एंड टू से दैट माई पावर इज मोर और द प्रॉस्पेरिटी हैज इंक्रीज, द गोपुरम विल हैव मोर हाइट देन द अर्लियर शिखरा ऑफ इनसाइड टेम्पल. देन आई डाई, my son comes, he becomes the king, he achieves even more prosperity, or he wants to show that he is even more or bigger patron or bigger bhakta of God. Then by that time थोड़ा और आबादी बड़ी होंगी, तो even one more wall outside that after some meters or few hundred meters, and that will also have gopuram, and that gopuram will be even more larger or even higher. तो साउथ इंडियन टेम्पल्स में एट द सेंटर जो श्राइन होता है उसका शिखर जनरली सबसे छोटा होता है. एज यू गो आउटवर्ड शिखर बड़े बड़े हो जाते हैं. ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल नॉर्म है कि भाई जो भगवान के ऊपर का सबसे बड़ा होगा, साइड के छोटे छोटे होंगे. ठीक है, ये फर्क है नागर द्राविड़ में. देन प्रदक्षिणा पाथ वी ऑलरेडी सा, संधार निरंतर हमने देख ही लिया है. देन यू हैव मोर फंक्शनल एंसिलरी बिल्डिंग्स एडेड टू द टेम्पल आर्किटेक्चर ग्रेजुअली अपार्ट फ्रॉम गर्भगृह. गर्भगृह इज द प्राइमरी थिंग. यू हैव बिल्ट टेम्पल बिकॉज यू वांट टू बिल्ड गर्भगृह, नथिंग एल्स, बिकॉज भगवान है, रिचुअल्स है. But then you have other things that coming up gradually. So if you go to any region, let us say Central India or Gujarat or Odisha, the older temples that you see of Gupta era or immediately post Gupta era, they have only Garbhagruha and some parts. As centuries go on, the temples become more elaborate and bigger, and newer structures are added to it.
एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट रीचेस अ क्लासिकल फॉर्म कि यहाँ पे टेम्पल में क्या क्या होता है. दैट इज एन स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन दैट वी वांट टू सी एंड अंडरस्टैंड. ठीक है सर, समझ रहा है ना क्या चल रहा है? फाइन. सो वी हैव मंडपा एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मंडपा. मंडपा इज नथिंग बट असेंबली हॉल विद पिलर्स. टेम्पल के सामने होगा, टेम्पल के आगे होगा, उसके भी आगे होगा. समटाइम्स इट इज कनेक्टेड, समटाइम्स इट इज नॉट कनेक्टेड. मंडपा. देन मंडपा एंड गर्भगृह को जो जोड़ने वाला रास्ता है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड अंतराल. देन फॉर एग्जाम्पल यू हैव अर्ध मंडपा एट द वेरी फ्रंट ऑफ द टेम्पल, जो कि हाफ ओपन टू द एयर है, हाफ इनसाइड है. We have a Natya Mandap, Bhoga Mandap that is coming, for example, in Odisha. I already talked about the meaning of those things. Then you have Gopuram in South India. I also talked about Gopuram entry. Okay, so you have various forms. Then it's just a comparison between two plans of Nagar and Dravid. I am purposefully avoiding Vesar today to minimize the confusion. We'll see Vesar tomorrow. So this is Nagar, and this is a plan of Kandariya Mahadev from Khajuraho, UNESCO World Heritage Site. And you have this plan of Brudeshwara, Tanjore Temple. It is also a UNESCO World Heritage Site. This is Nagar and this is Dravid. You can see all the things. This is the entry of the temple, that is Ardha Mandapa. Then you reach Mandapa. You have Nandi Shrine, Maha Mandapa, etc. So you have some Nandi Shrine is here, not there. Sorry. We have all other things that you can understand कि हमने जो अब तक देखा था. But interesting thing is this temple is built on a platform that is called as Jagati in north. So Jagati, 8 number, and then you have various subsidiary shrines. So in north you have this tradition, also in south sometimes. The main shrine is over here and 4 subsidiary gods are in 4 corners. Thus it is called as Panchayatan temple. Panchayatan. 5 gods रहेंगे यहाँ पे, primary shrine and 4 subsidiary shrines. In south we have this Nandi Mandap and Mandap. So you see it is getting complex, and here it is generally square over here in south. Let us go ahead. So we have already seen what the plan is: square, circle, Dravid. We saw the plan. Now come to next part, that is the elevation. Elevation is walls from the Jagati or bottom or foundation till the Shikhara. जो walls है उसको elevation बोलेंगे. So the first character on which you compare all the temple from this plan, the second on which you can compare them is elevation. Now external ornamentation, that is alankars. So if you again go to Khajuraho, I will take that example again and again because it is the picture that comes to mind very easily. There are a lot of profuse ornamentation in the form of sculptures on the outer walls. These are called alankars. And alankars are basics to Indian beauty conception or Indian aesthetics wherever you go. In temple architecture you have hundreds of beautiful alankars defined. In music you have alankars, we will see them when we see classical music. In Sanskrit literature we have alankars, alankaran hota hai wahan bhi. So alankars is a specific Indian concept of beauty. शरीर पे हम अलंकार पहनते हैं, गहने, ठीक है. So anyway, so firstly you need to understand that temples are conceived not as 2-dimensional things but 3-dimensional things. मतलब क्या है? In the West, you go, they focus on facade, like गवाक्ष का कैसे सामने होगा. So it is nothing but 2 dimension protruded outside. So it is 2.5 dimension. और वहाँ sculpture होगा, pillars होंगे, triangle होगा, नीचे pillars होंगे, सब कुछ. That is 2.5 dimension. Although it is 3D, conceptually I am telling. But Indian temple is supposed to be seen not from the front, but from the isometric view. ठीक है. That's why you see the shikharas also, they are very complicated. Geometric patterns repeat होते रहते हैं उसमें. So first of all, you need to understand that from this core Garbhagruha, everything radiates outside, on the front, on the bank, on the top, on the bottom, everywhere. It is a 3D conception of a structure. Then you have 3 walls and 1 door, basically old structure में. So even these 3 walls on the shrine are called Ghana Dwar. Why Dwar? Because God's light is supposed to emanate even from that part. So it is an integral part. Even on that they are close, so we call them Ghana, but they are still Dwars. ठीक है. And then we have narrative reliefs, animal, floral, geometric design, all to decorate or alankar the elevation. Sculptural activity चलती है. On the other hand,
we have certain motifs which are like small symbols which are always repeated, and that repetition is strictly as per geometric rules, progression, proportions, relationships, etc. There is complete geometry involved. This is not just मैं लगा यहाँ पे लगा दूँ वहाँ पे अच्छा लगेगा, वैसे नहीं होता है. Geometric formulae होते हैं हर चीज़ के. And so honeycomb pattern, Shikhara, Amal. So in North India, it is primarily Shikhara and Amalaka. Amalaka comes on top, we'll see. Shikhar and Amalaka, which are repeated in the temple architecture. And in South India, we see Kuta and Shala. Kuta we already saw in Pallava on the front yesterday. That is Kuta, which is repeated. And Shala is nothing but a wagon vaulted or oblong shape, which is also repeated. Let us take this example of elevation. This is a top view of again Kandariya Mahadev. It is a fully developed, supremely beautiful, majestic, magnificent temple. But we did not reach that level in a matter of days or years. It took centuries of experimentation, what works, what doesn't work, centuries of that to reach that level. This is the old normal temple of Gupta era, top view. On top view, you have this shrine, Garbhagruha, right? And you have this entry, so Dwar, and 3 walls, they are called Ghanadwar, right? On all the 3 sides, we have this protrusion coming over here, protrusion and protrusion. Okay? So in that you can have your sculpture. Is it fine? So यहाँ पे once there is one protrusion, I get 3 surfaces, 1, 2 and 3 to have my sculptural activity. Okay? So it is called as Triratha. It's a basic of the basic terms, Triratha. When I add one more protrusion to it, it becomes Pancharatha. Are you able to see that, ma'am? Then you have Saptaratha and like that. Okay? So gradually as you go on adding such protrusions, it becomes even star-shaped pattern. So it is Ratha. So we will keep referring to many temples in ये Pancharatha temple है, Saptaratha temple है, based on this top view. So this is the elevation in which you have reliefs or sculptures in Nagara plan. So this is a typical Saptaratha plan of Kandariya Mahadev. It's a beautiful plan. On the other hand, we have the wall of South Indian temple. Here we do not have rathas. So major important difference in Nagar and Dravid is that in elevation, in north we have rathas, in south we do not have rathas. What we have is such entablatures, niche, and in each niche you have gods. That's why when you look from top, it still looks like a square. ठीक है? और यहाँ पे आपको दिखेगा star. So it is a plane with all niche and you have deities sculpted out of that. That is in South Indian Dravid temple. So it's one of the major differences in Dravid and Nagar. This one is vertical? Yes, this is a front view or side view, you can say. Side view. This is a top view. But it is the way to explain, so I put those together. सामने से आपको ये बगल से ऐसे दिखेगा. You have niche 1, 2, 3, 4 and you have deities there. This is an example of development of Nagar style. ठीक है? You have Parvati temple of Nashna Kothara in Gupta era, a simple square plan. Then you have Triratha, Pancharatha and Saptaratha. This is an evolution. ठीक है? Devgarh, Modhera का सूर्य मंदिर in Gujarat and you reach Kandariya Mahadev in Khajuraho. No, Nagar. Basically, there are only 2 types, Nagar and... No, there are multiple types. That's why I said, na, I am explaining 2 basic forms Nagar Dravid to you right now. We'll go to the types, don't worry. Subtopics नहीं वो वाला नहीं. कौन से subtopics? They are not sub-categories of these 2. No. Some of them are not. The Nagar has subcategories. Dravid also has subcategories. Basically, is neither Nagar nor Dravid, and it has its own subcategories. ठीक है? So we saw the difference in plan. We saw the difference in elevation. The third variable that we have considered is difference in shikharas or tower. ठीक है? So when they ask you a question in mains, you can't just compare by इसमें शिखर इसमें विमान ऐसे मत करो यार. You have to go very methodically and very logically.
The variables for comparison are three, apart from many other subsidiary variables. Structurally, I am talking about plan, elevation, शिखरा, and then you compare. इसका प्लान ये है, उसका प्लान वो है. Okay. So when you compare शिखरास, you have three basic शिखरा types. शिखर types. थोड़ा इंग्लिश में पढ़ के शिखरा हो जाता है उसका. But actually it is not wrong as well. You know that? Call me शिखरा. In Hindi, हिंदी में क्या है? Hindi has a lot of influence of Farsi on it. So आखिरी अक्षर हलंत कर देते हैं. That is not Sanskrit tradition. That is not Indian tradition. Originally, हलंत बनाना is Persian influence on Hindi. If you go to Sanskrit, then आखिरी अक्षर का पूर्ण उच्चारण होगा. ठीक है, घर, मैदान, मैदान नहीं बोल रहा हूँ, मैदान हलंत कर दिया तो शिखरा बोलूँगा तो that becomes original. शिखर, that is Persian influence of pronunciation. राम में भी करते हैं, राम में लोग राम शॉर्ट बोलते हैं. हाँ. जैसे राम, राम. वही पूरा बोलना है. योगा भी करते हैं, योग is like योग, योग. नॉट योग. योग इज फारसी. योग is something. ग को आपने हलंत कर दिया ना. योग, योग पूरा बोलो. संस्कृत में तो योग है. योगा कर उच्चारण बोल रहा हूँ, योग. ठीक है. एनीवे, so South Indian languages have carried a tradition forward of completely pronouncing the last letter as well. So anyway, English का भी नाम शिखरा. So we have three shikharas: Latina, Famsana, and Vallabhi. This is the classification given in your NCERT of Fine Arts 11th standard. Although this is a very generic classification, and we have even multitudes of the types of shikharas, some of which we will see. But this is a basic classification. So in Latina, you have this square base, and from square you gradually go towards a point. That is Latina. In Famsana, you again have a square base, but you do not go in a curvilinear fashion. You go in plate by plate, step by step, like a pyramid. And each pyramid or each step is a shorter or smaller than the earlier step. That is your Famsana. And you have Vallabhi. Vallabhi is wagon wheel, like this, and its protrusion. ठीक है. ये बेसिक तीन टाइप. अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, दैट इज वेरी स्पेसिफिक. विल कम टू नो व्हेन वी गो फ्रॉम रीजन टू रीजन. In Shikhara, we have this thing as well. As I said that North Indian temples were supposed to be, or rather North Indian temples were supposed to be three-dimensional. The best beauty of Indian temples you can see when you look at them from sky and not from front. Western Roman architecture is prepared to be looked from the front, जो आपके impress कर देगा पूरा. Indian temples आपको front से उतना impress नहीं, जब आप ड्रोन भेजो देखो फिर कैमरा लगा के, then you will get hugely impressed. So this is the example of शिखरा. यहाँ पे you have one शिखरा and very minor शिखरास. There were अंग शिखर और उरुश्रृंग, and there is geometric pattern of it. And geometric pattern is very geometric with rules. So example is like this. It's like fractal. You know fractal? Maybe not. Don't worry about, not required. The fractal self-imaging. The main shikhar is imaging itself on that again, on that again, on that again. So you have this self-imaging. These are modern mathematical things, but I am just giving it here for understanding. The shikhara is supposed to be like this and to look from the top. So this is the basic thing. We understood the concept of temple, some basic parts in the plan, then elevation, and then shikhara. Now come to the historical evolution of temples. Okay, don't worry if you don't remember these words, there is no problem. So क्या क्या रटना है चिंता मत करो. It was just for conceptual clarity. So we have this pillar, Heliodorus pillar. We have already seen that, and we'll keep seeing that many times. It is in MP, built in 2nd century BCE, and such pillars were erected in front of a temple. Like many of the Ashokan pillars are erected in front of once existing stupa or monastery which doesn't exist anymore. Likewise, in Hinduism as well, we have we have pillars erected in front of temple. जैसे मंदिर हमने आजकल कई जगह नंदी होता है. नंदी का मंदिर नहीं अलग से होता है, एक हाथ दूसरा हो तो बात अलग है. नंदी तो इफ आफ्टर 1000 years somebody finds नंदी का shrine, वो सामने मंदिर होगा, मंदिर है नहीं. Likewise, so this mandir doesn't exist, but we have an idea that even at that time Vaishnava temple existed. It is a Vaishnava thing. Heliodorus, the Yavana who got converted,
Then you have various architectural remains of that era. For example, you have this from Sonk. Sonk comes in Mathura, and one is from Vidisha, again a reconstruction. So in Mathura, in Vidisha, the temples which do not exist anymore. You see, because this is the era and this is the people who are also constructing Buddhist monuments. तो कला तो थी, तो टेम्पल बनते थे कुछ कुछ. अब इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहे वो, क्योंकि इस समय इतने इंपॉर्टेंट शायद नहीं होंगे. Look at the structure, it is apsidal, apse, right? So the form of temple has not yet crystallized in the classical sense. This is again a circular temple. Again, we don't see such temples much more anymore. We have temple number 40 at Sanchi, which might have looked like this. We don't know which god, we have no idea which religion also, but temples existed. We have another temple at Sanchi in front of the great stupa, which would have looked like this. अगेन वी डोंट नो, पीछे जो एप्स है उसके. तो टेम्पल्स बनते थे पहले, ऐसे नहीं गुप्ता के वाले टेम्पल नहीं थे. बट द थिंग इज फ्रॉम गुप्ता एरा वी सी द इमरजेंस ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी इन इंडिया. तो यहाँ से हम हिस्ट्री ट्रेस करना शुरू करते हैं. फर्स्टली बिकॉज इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर, एंड सेकेंडली बिकॉज वी डू नॉट हैव द अर्लियर स्पेसिमेंस एज वेल, दे आर लॉस्ट. हाँ, so we have the 2 centuries of unbroken unity, peace and prosperity, and this is the high watermark of Indian artistic development. These are the maps. I think you know the maps taken from Wikipedia. What is the major difference here in between 2 maps? हाँ, एम्पायर एक्सटेंशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया. पिंक इज गुप्ता रीजन, ठीक है. कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन बोथ थिंग्स हैव हैपेंड. इन द फर्स्ट वी हैव साउथ इंडियन वाला समुद्रगुप्ताज दिग्विजय, नेक्स्ट में वो चला गया. बट इन द नेक्स्ट दे हैव कॉन्कर्ड गुजरात एंड देयरफॉर ओपन एक्सेस टू द वेस्टर्न कोस्ट एज वेल. दोनों हुआ है. नंदलेस उनका कोर रीजन जो है ना वो डार्क किया हुआ, इट इज शेडेड. सो यू कैन कम टू नो कि मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स ऑफ गुप्ता एरा दैट वी फाइंड आर इन दैट कोर रीजन, ठीक है. एंड वाकाटकाज आर कंटेम्पररी ऑफ गुप्तास, and that's why we can call them Gupta Vakataka art, because Vakatakas were highly influenced by Guptas, but they also had their own initiatives. Guptas at one point of time, Vakatakas are very important to Guptas because they control a lot of access to South Indian roads and western coast, both angles. So at one point of time, Guptas even sent one of their daughters to Vakatakas and got married her there. Then her husband died. Then through her, Guptas controlled the entire Vakataka empire. Prabhavati Gupta. There are a lot of interesting stories, but not part of our curriculum. So we'll see a few of these temples in the central heartland. Okay, आगे चलते हैं. Gupta evolution, Gupta temples evolved, and here you will see this lot of additional structures coming into being one by one. The oldest or the earlier part of Guptas, the temples are like this. It's a place near Jabalpur called Tigawa, where we have this temple, the first one. The second one, the first one is at Sanchi, which is still existing. They are built in typical stones, dressed stones. This dressed stone temple is again Indian characteristic. ठीक है. Dressed stone temples. What we have is plain, square, flat roofed garbhagruha for deity. Plain, square format में है. Plain because on none of the walls you have a lot of sculptures. So plain, square, flat roof. शिखर है ही नहीं. शिखर डजंट, ऐसे नहीं कि वो टूट गया, था ही नहीं कभी पहले से उसमें. सो इट वॉज नॉट कंसीव्ड एज एन आइडिया येट. सो प्लेन स्क्वेयर, फ्लैट रूफ्ड गर्भगृह फॉर डेइटी. इनर श्राइन विथ ओनली 1 डोर एंड नो विंडो. सामने का ही दरवाजा है, कोई विंडो नहीं है आसपास. एंड देन लो पिलर्ड मंडपा और शैलो पोर्च इन फ्रंट फॉर वर्शिपर्स. यू हैव अ शैलो पोर्च हियर सामने एंड कुछ पिलर्स हैं ताकि वहाँ पे वर्शिप करने के लोग खड़े रहे, अंदर की वर्शिप चले. सो सिंपल वर्शिप, simple god, simple structure. Now you go to next level. You have these temples. यहाँ पे क्या हुआ है? We have 2 other examples. Parvati temple in Nashna Kuthara and Shiv temple in Bhumra Koho. This Bhumra Koho and Nashna Kuthara temples show you 2 more things. Firstly, you have this Jagati, a platform coming into being now. A very important characteristic for many of North Indian temples. Sometimes it is very small, sometimes it is very large. बट इट इज़ इम्पोर्टेंट इन नॉर्थ इंडिया. प्लेटफॉर्म होना चाहिए टेम्पल को.
स्पेशली इन सेंट्रल इंडिया, इफ नॉट एंटायर नॉर्थ, सेंट्रल में तो होना ही चाहिए, सेंट्रल उड़ीसा में होता ही होता है। एंड रेड स्टोन है ये, शिखर अभी भी नहीं है। एंड यू हैव, बिकॉज ऑफ दिस जगति, यू हैव प्रिज्यूम्ड प्रदक्षिणापात, ठीक है। देन यू हैव नेक्स्ट लेवल, हियर यू सी अ शिखरा इमर्जिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस गुप्ता एरा टेम्पल्स, दशावतार टेम्पल इन देवगढ़, ठीक है, यूपी एमपी बॉर्डर, झांसी के यहाँ पड़ता है वो। एंड हियर यू सी सम स्कल्पचर टेकिंग प्लेस ऑन द साइड्स। NCERT has given lot of photos of the sculptures as well. अनंतशाही विष्णु है, कौन सा विष्णु है, स्कल्पचरल एक्टिविटी कैसे हिंदुइज्म की आ रही है। इट इज कंटेम्पररी ऑफ उदयगिरी केव्स इन MP दैट वी सॉ, वराह अवतार, ठीक है, उसका कंटेम्पररी है ये। देन यू हैव दिस थिंग कमिंग। सो इनिशियली वी हैव दिस स्कल्पचर, बट इट इज अ niche like South India. Now this will come out and you have this Triratha format coming into being. It's a classic form. यहाँ से फिर classic definition of temple शुरू होती है इंडिया में, ठीक है। So we have this in Bhitargaon, brick temple near Kanpur in UP, western UP, not western but ठीक है UP. So Triratha projection यहाँ से शुरू होते हैं। So we have थोड़ा सा जगति, we have a pradakshina path, but it is not yet covered as such, but still it is there. We have a शिखरा and we have त्रिरथा। तो टेम्पल अब फॉर्म होने लगे क्लासिक फॉर्मेट में। सो गुप्ता के 200 साल में इट टुक 200 ईयर्स टू रीच दिस लेवल, क्योंकि आप मंदिर बनाओगे रातों रात तो दूसरा नहीं बनेगा, रिलीजन इवॉल्व होगी, पैसे आएंगे, स्कल्पचर इवॉल्व होगा, धीरे धीरे वो मॉडिफाई होगा, ठीक है। एंड दिस क्रिएट्स द बेसिस फॉर रेस्ट ऑफ द टेम्पल्स। अब ये ईंटों में बना हुआ है। सो वी हैड स्टोन टेम्पल्स, ब्लैक स्टोन, वी ऑल्सो हैड रेड स्टोन, वी ऑल्सो हैव ब्रिक टेम्पल्स। सो मटेरियल डाइवर्सिटी तो है ही है, but it is not the only format. This is just chosen for the linear evolution to tell the story, but simultaneously you have various other plans that were tried in Gupta era. One was this octagonal temple in Bihar, Mundeshwari Devi. It is still existing. It's an octagonal temple and it did not succeed much. It did not become popular, तो हमने रोक दिया बाद में इसको। In medieval India, when you see various tombs, तो टूम के भी स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुए हैं ग्रेजुअली, आर्चेस इवॉल्व हुए हैं। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। वी हैव दिस सर्पिलर टेम्पल इन राजगीर, अगेन नहीं चला सर्पिलर टेम्पल, रोक दिया, ठीक है। बट द वेरियस फॉर्म्स वर एक्सपेरिमेंटेड इन गुप्ता एरा, वहाँ से फिर क्लासिसिज्म इमर्ज होता है। Now what we'll do, we'll go region by region everywhere and see the development of temples in 4 or 5 major regions. So far, do you have any questions? Any doubt? Some clarification? So all these are artificial types, also naturally being. Natural temple मतलब गुफा के अंदर? हाँ, No, no, no. This is constructed temples. all हाँ हाँ, टेम्पल का मतलब वही समझते हैं हम, ठीक है। गुफा में कोई जैसे कि अंदर अमरनाथ की केव बनी हुई है और लिंग है, वो नहीं, हम ह्यूमन एंडेवर की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कहाँ कहाँ भगवान है, इट्स नॉट अ कोर्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। हाँ, आर्किटेक्चर की बात चल रही है। रादर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज प्रिज्यूम्ड like 50, 70, 100 years ago, when historians used to study this evolution of structures, they thought कि initially स्तूप थे, रॉक कट थे, रॉक कट के बाद धीरे धीरे आके वो completely monolithic रथा बन गए, and then the artists or artisans felt strong enough to go for structural temples. So transition has taken place from rock cut to ratha, monolithic ratha, to structural temples built with the help of stones. That was evolution. That was thought of at one point of time in the past. Now it is completely debunked and discarded. ऐसे नहीं था. We know both of them existed parallelly. We already saw the examples of pre-Gupta structures, and we also saw examples in 10th, 11th century of carving in the stone. एलिफेंटा हो, बाद में हो, लास्ट से जो कैलाश हो, ठीक है। तो दोनों, there is a point after which we see no more cave architecture, that is sure.
In the medieval there is not much cave architecture, that stopped because the activity ceased. पैटर्न खत्म हो गया, राजे बदल गए, लोग ट्रेड बदल गई, इकोनॉमिक रास्ते बदल गए, सो दैट्स व्हाई दे वर लेफ्ट अलोन. पर ये ट्रांजिशन ऐसे नहीं हुआ है, ठीक है. बट दीज आर द स्ट्रक्चरल टेम्पल्स दैट वी आर स्टडिंग राइट नाउ. सो लेट अस गो टू 5-6 मेजर रीजन्स. वी स्टार्ट विद सेंट्रल इंडिया. एंड सेंट्रल इंडिया में इफ यू गो टू 6th century, immediately after Gupta, we see lot of influence of this Gupta era defined Nagar structure. But from that we gradually go to the specifics of Central Indian architecture, which is nothing but a regional art of Central India and sub school of Nagar. ठीक है. So this is the earlier temples. I have listed a few temples over here. We don't need to know all of them. I have put photos of only earlier and the later. This is the earliest temple in Sirpur Lakshman temple that we find over here. It is highly influenced by Gupta era temples. You can see that. We have a Jagati. We have some form of Triratha. It's not complete Trirath yet. It seems we have this Shikhar as well. So ये है. यहाँ से लेके you have one small hall, but it is not pillared yet as such. From here you go to here and we see the emergence of Central Indian characteristics. That it has 1, 2, 3 Pancharatha or Saptaratha. Then you have veranda and pillar in the front, and this is getting stopped, and यहाँ पे you have a typical Central Indian shikhara. We'll discuss the details of this shikhara, but you see this transition from here to here to 200-300 years. But now the specific Central Indian regional temple architecture, which is a sub school of Nagar, is emerging in after Gupta era. So it is Lakshman temple in Sirpur, Virateshwara temple in Sohagpur. We have a lot of temples in Amarkantak as well. Amarkantak आपको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, नर्मदा उगम वहाँ पे होता है. इट्स यूपीएससी आस्क क्वेश्चन अमरकंटक का लोकेशन एज वेल 5 years ago, 6 years ago. अमरकंटक के बहुत सारे मंदिर अब तक नहीं रहे. दे आर डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ निग्लेक्ट एंड डिसयूज एंड लॉट ऑफ थिंग्स. बट वी हैव सम टेम्पल्स इन अमरकंटक विच स्टिल एग्जिस्ट टू दैट एरा, बट दे आर गोइंग टूवर्ड्स इमरजेंस ऑफ सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर. नींद आ रही है? अच्छा, आंखें देख रहे. ठीक है. लेट अस स्टार्ट टू लर्न द फीचर्स ऑफ सेंट्रल इंडियन रूफ. द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल इंडियन थिंग इज डबल आमलकास. दिस थिंग इज आमलका. दिस डिस्क with fluted angles is amalaka. In central India you have 2 amalakas, one bigger and then one smaller. That is a specific of central Indian architecture, 2 amalakas. Then you have these parts, these are called pagas. They are supposed to end over here, but from the 4 corners and later on from multiple corners, pagas go beyond this line upwards. And they almost reach the amalaka in a triangular fashion. That is the second characteristic of, we don't need to remember. I am just explaining the features so you can appreciate the beauty. ठीक है. Then you have this each element becoming its self image. I showed initially fractal geometry, self image, the Urushrunga or Anga Shikharas, and you getting this complex and ornate. And ultimately you have this spiritual interpretation of this as well, कि भाई कैसे आप शिखर तक पहुँचते हो in your spiritual journey. तो वो ठीक है, बट जस्ट फॉरगेट दैट पार्ट, हमें उससे लेना देना है नहीं अभी, हम बस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. दिस इज द फ्रंट इज द टॉप व्यू. इट इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है. सो इफ यू कंपेयर द रूफ, दिस इज द रूफ और शिखर. देन यू हैव प्लान. अ टिपिकल प्लान, गर्भगृह विद द डेइटी. देन यू अंतराल विच कनेक्ट गर्भगृह टू मंडप. नाउ वी हैव अ बिगर मंडप कॉल्ड महामंडप, जहाँ यज्ञ विज्ञ होगा, कुछ बैठेंगे लोग. Then you also therefore another mandap. So mandap, mahamandap, antaral and garbhagruha. You have a passage for circumambulation. It is pradakshina path, so it is a sandhar type temple, not nirandhar. On the side you have 1, 2, 3 and 4. So here 3 and 3, 4, 6 and 1, 7. So it is Saptaratha temple, right? Then you have entry, Ardha mandap in the beginning, open to air in the front, and then you have passage. So this is a plan. Now come to the features. This axial arrangement from Garbhagruha till Ardha Mandap is a common thing of all these Central Indian temples.
बाकी जगह भी पाई जाती है, कभी कभी, कभी कभी नहीं पाई जाती, यहाँ पे हमेशा रहेगी. Second thing is all of these things are now rested on a platform, that is Jagati, raised platform. Can you imagine that? Then you have Sandhar, and one very beautiful element that is specific to central India and then modified to west, or modified in the west in Maru, Gurjar, Rajasthan, Gujarat as well, it is this Chhajja. So we have this roof, these are eaves, they are Chhajja, and we have these seats over here built in the wall. वॉल में आप बैठ सकते हो, वहाँ पे कुर्सी बना दी अंदर, तो पत्थर बाहर आते हैं बैठने के लिए. So it is called Kakshasana, Kaksha Asana. Kakshasanas for the first time were added to central Indian temples. Before that we don't have anything like this. The older temples we see, they are closed from the side, no window, nothing. अब जैसे ही मंडपा बढ़ गए, we have these Kakshasanas, and this is a beautiful thing that you can see. It's a good invention. You will see the importance of it. Then you have third part, elevation. So we have seen the Shikhara, we saw the plan, let us see the elevation. I already talked about it's very rich carving. We already know about Khajuraho, all these figures doing various things on the walls. तो sculptural activity बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. Then there is new thing which is new to all the regions now in North India, that the walls are not only divided horizontally like एक रथ, त्रिरथ, पंचरथ, they are also divided not only vertically but also horizontally. There are levels as well. So one level of figures, then you have one line separating them, then your next level of figures, then again line, then next level of figures. Can you imagine that? समझ रहा है सर? देखो, I'll show you the photo. Where is the photo? Yes. So you have this protrusion, then behind this and behind this and behind this. So you have this Saptaratha, 1 plus 3 here, 3 there. On the vertical thing, you also have these lines. So you have one level of figures, second level of figures, third level of figures. Earlier we had only one level, one god. Got it? So we have these divisions and these divisions. So horizontal, vertical सब division होगा temple के wall की to have many sculptures. ठीक है? It's not about the process कैसे बना है, ये सब साथ में ही बना है, ऐसे ही इसको डिजाइन किया था from day one. It's about dividing the place. Yes, yes, yes. similar type जो द्रविड़ में आपने दिखाया था, ये रथा तो include नहीं हुआ, but नहीं, द्रविड़ में वर्टिकल नहीं था. देखो, I'll show you here. द्रविड़ में क्या था? You had a wall like this. On the wall, you make such things. खिड़कियाँ, आधी खिड़कियाँ, and then you have some figure over here. ठीक है? That is where it starts in the beginning. If you have heighted part, if you have more height, then you can go for additional as well. But primarily क्या है? It is if you look on top on the same level. यहाँ पे क्या हो रहा है? You have, if I have to draw in 3-dimensional, I forgot all these things now. ठीक है? So this is 1, 2 and 3 Saptaratha, right? नहीं सब Pancharatha, 2 here, 2 there and 1 here, Pancharatha. And on this now you are dividing like this. ठीक है? तो ये बात है. So carving is taking place into horizontal and vertical levels. So when you divide them vertically, they are called Anga. And horizontally we have Ratha. So the highest level, I have say Sapta Ratha and Sapta Anga. अब दोनों साथ में आ गया. And this is the maximum or pinnacle of the architectural design of temple in entire India. कि harmoniously साथ में कैसे आएगा? The best example is Kandariya Mahadev again, the one which I just showed you. ठीक है? We'll see that. Come to Khajuraho, UNESCO World Heritage Site. We don't need to go into history, but they're built by Chandelas. It was Chandela capital, Chandel capital.
खजुराहो. Now that area is no, थोड़ा backward area है वो, so called. Now we have actually more than 50-70 temples there, but a lot of them are gone, destroyed. 25 still remain, 25-30 still remain. The three most important temples for us, apart from Jagadamba temple, Kali temple, there are many temples. The three temples which fully exhibit all the characteristics of Central Indian architecture: Lakshman temple, Kandariya Mahadev, and then you have Vishwanatha temple. Now what UPSC asks, match the pair, कौन सा टेम्पल कहाँ पाया जाता है, ठीक है. For sometimes it might ask you कि ये टेम्पल कहाँ कहाँ पाया जाता है. For example, if you have one temple and the other temple of the same name in other place, you need to know that as well. So हर जगह के major temples कौन से हैं and कौन से era में आते हैं, these are factual things that we need to remember. But I am giving the additional muscle in the format of story and evolution, so that it becomes easier to understand and grasp. The largest one are like this only, 3. So you can divide them into multiple ways. You can divide them based on size, based on stone, based on location, Sandhar Nirandar, location, all these things, deity and all. It is just a basic factual thing. Come to the temples and see the architecture there. This is a typical photo that you find in any Google image. Generally, you immediately find this photo, and it is the most fully blown architecture of Central Indian style. We have this platform, Jagati, ठीक है. We have inside this Garbhagruha, right? And then we have circumambulation, Saptanga and Saptaratha. Then you have Shikhar, double Amalaka, and then Kalasha. These subsidiary shrines going there, subsidiary Urushrunga or Anga Shikhar. We have Antaral over here, which connects Garbhagruha to the Mahamandap, then Mandap, in front of Ardha Mandap. Okay, very simple. This is Lakshman temple. So 3 important temples. Lakshman temple, all the formats here. It is, in addition to that, it is Panchayatan, because we have these 5 temples on the corner. Very elegant, very beautiful. We have this Kandariya Mahadev again, and the third one is Vishwanath temple. These are the 3 fully blown, which has all the features of Central Indian temple structure. There are many other temples, and not all of them exhibit all the features. Some of them have some of them have others. So I have chosen these 3 because this will contain all the features. And this is this Kakshasan, Chhajja, Eve. ठीक है, आपको हमेशा खिड़की मिलेगी यहाँ पे. यहाँ भी you can see the खिड़की. This adds to a beauty. No, Gupta तो कब के चले गए. In the previous PPT, this Chandel. हाँ, अरे यार, don't do like this. You have this Chandel capital 10th 11th century. Gupta's happened in 4th 5th century. हम आगे चले गए. Gupta का, we saw the explanation of Gupta. Then we are coming to regions. From 6th to 9th century I talked about. In the 6th century in this region, I showed you this part. These are the 6 older structures, and then come to 9th 10th 11th century. तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं पूरा. ठीक है. But these are not the only temples. We have various other rituals as well, various other worships. So we have this Chausat Yogini temple in Khajuraho. It's a circular temple. It is for tantric worship. And this Chausat Yogini has various sculptures of yoginis. So we have various temple structures of other format as well. And they also come in Nagar. You have this temple in Mitavali. Now it is also a Chausat Yogini temple. You enter from here and you have all the yoginis inside. Then Shankar का भी वहाँ पे मंदिर है. Point ये है कि many people claim that looking at this temple structure only, the person got an idea of structure of Indian Parliament. ठीक है. Now to what extent it is true, I do not know, but it is generally claimed by many people. This is a place called Morena in Bateshwar. Sorry, place called Bateshwar in Morena, near Gwalior, north of Madhya Pradesh. And you have various such small temples together. There is an interesting story. ये सब टूट चुका था. It was completely destructed over centuries by ravages of time. कोई दिखता नहीं था यहाँ पे. And it falls in between Delhi, Agra, Jaipur triangle of
और जो लोगों को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ टूरिज्म लगता है, विदेशी लोग आते पहले यहीं जाते हैं, दिल्ली, आगरा, जयपुर, लगता हमने इंडिया देख लिया। सो उसके बीच में पड़ता है। सो इट कम्स अंडर आगरा सर्कल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आगरा सर्कल ऑफ ASI। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे चीफ थे के मोहम्मद साहब, ही इज़ फ्रॉम केरल, एंड अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेशन ये टेरिटरी थी, एंड ही फाउंड दिस रिमेन्स इन स्टोन्स एवरीवेयर। इस सॉर्ट से इसको रिस्टोर करते हैं, बट देर वॉज प्रॉब्लम, इट्स ए चंबल रीजन, वेरी डेंजरस, गुंडे रहते हैं, एंड इट वॉज सो सेक्लूडेड, सो इट वॉज यूज एज अ शेल्टर बाय मेनी डाकूज। जंगल के अंदर था, तो आराम करने के लिए यहाँ जाकर रुकते थे, खाने सोते थे, उनका अड्डा था पूरा ये। ही वेंट एंड फोल्डेड हिज हैंड, भाई देखो प्लीज़ यू गो अवे फ्रॉम हियर, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट धरोहर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हमको वी आर ट्राइंग टू रिकन्स्ट्रक्ट, तो अगर आप छोड़ दोगे, जगह दोगे तो हम कर पाएंगे। डाकू ने पहले माने नहीं, बोले अगर यहाँ पे टूरिस्ट आना शुरू करेंगे तो दे आर कमिंग टू द वेरी हार्टलैंड ऑफ अवर एरिया, तो हम पकड़े जाएंगे, हाउ कैन वी मूव फ्रॉम हियर टू देयर। अल्टीमेटली ही परसुएडेड देम, डाकू ने मान लिया। ही स्टार्टेड पुटिंग द स्टोन्स टुगेदर। नाउ he used lot of computational methods to understand कौन सा stone कहाँ जाएगा। As remember I told you कि it was not used with the help of, it was not constructed with the help of mortar। तो stones पड़े हुए तो उनको दोबारा जोड़ दो। अब इतने सारे पत्थर पड़े, कौन सा पत्थर कहाँ जाता है, it was a very hectic task। He did that, he started doing that rather, it took a long time for that। जैसे ही बनने आया, then at that time शिवराज सिंह चौहान was the minister of मध्य प्रदेश। He said this area is very important for coal extraction, तो हम इसको देना चाहते हैं। Now के मोहम्मद साहब got flabbergasted कि भाई हम were trying to protect a monument of importance over here which is 1000 of year old, and you want to give this area to some contractor who will come and take the coal out of it। ऐसे नहीं तोड़ देगा सब कुछ ये, give us protection। He wrote, he talked to everybody, nobody listened to him। He went to the CM directly। CM was not very responsive at that time। I don't know the veracity of this। This is the story coming from his own mouth। क्योंकि मोहम्मद साहब himself has told this story, so let us assume it is true। ठीक है। CM was not very readily inclined towards accepting his proposal। Then he started writing letters to the President of India, Prime Minister of India, nobody replied। So you know what did he do ultimately? How he ensured the protection of this monument? He wrote letter to सरसंघ चालक of RSS कि भाई आपकी सरकार है और आप मंदिर तोड़ना चाहते हैं और आई एम के मोहम्मद, आई एम ट्राइंग टू रीबिल्ड द टेम्पल रातों रात। सो anyway, this is how the monument was reconstructed and then safeguarded। Come to Rajasthan, the next region। So features, these are the pillars of कुबतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, जहाँ पे आज कुतुब मीनार है। एंड देयर इज इंस्क्रिप्शन ओवर देयर दैट सेज द 27 जैना टेम्पल्स के पिलर्स यूज करके इसको बनाया गया है। नो वी डोंट नो वेदर दे वर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड या फिर वहाँ पे उनको तोड़ा गया था, दैट इज इमटेरियल टू अस। पॉइंट इज दैट इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेसेस जहाँ से हमें उस समय का राजस्थानी आर्किटेक्चर कैसे होता होगा उसकी आइडिया लगती है। We come to know the pillared halls were prominent features of the Rajasthani architecture in the earlier time. That is important to us। Second thing, Rajasthan shared lot of commonalities with Central India। High महापिष्ठ और जगती वाला प्लेटफॉर्म, देन शैलो पोर्टिको, सामने का जो अर्धमंडप होगा काफ़ी शैलो होगा, थोड़ा सा होगा, डीप नहीं होगा। थर्डली मंडपास विद कक्षासन वो भी रहेंगे मंडप के बगल में। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स बिटवीन राजस्थान एंड सेंट्रल इंडिया। बट राजस्थान हैज़ इट्स ओन पिक्यूलियरिटीज एज वेल। सॉरी, सो इट हैज़ ओनली वन आमलका ऑन शिखर, not to Amalaka, that is very specific to Central India। Secondly, instead of this 5 or 7-fold division of Bada, Saptanga Bada, Panchanga Bada, etc., it is only 3-part division। So 3 अंग बाड़ा ओनली, वर्टिकल 3 जो लाइन से 3 ही अंग है इसमें। एंड थर्डली इसमें अंग शिखरा जो उरुश्रृंग होंगे शिखर पे, दे आर वेरी प्रोमिनेंट। विल सी इन वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ शिखर सेपरेटली, बट दे आर वेरी प्रोमिनेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मरु गुर्जर स्टाइल। मरु इज मरुस्थली, ठीक है, मरुस्थली जानते हैं, डेजर्ट प्लेस। सो मरु गुर्जरा स्टाइल विच इज कॉमन टू बोथ गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। So these are the Urushungas or Anga Shikharas, they are very prominent. You can see
It is called as Bhumija style Shikhar. It is nothing but a sub category of the Latina Shikhar that we saw in each. Latina, Famsana, Vallabhi हम देखा था हमने. No, Latina Shikhar is getting modified gradually in each region. When we saw Latina in central India, we had two Amalakas. Now when we see Latina over here, it is called Bhumija Shikhar, and it is generally found in this part of India mostly. ठीक है. This is the Latina Shikhar, very peculiar to Western India. So this is one example of Rawat Bhatta in Kota. You see कि ये भूमिजा शिखर यहाँ पे कैसे बन रहा है. यहाँ पे अभी भूमिजा नहीं बना है, रादर बाद में बनेगा. सॉरी. यू हैव दिस टेम्पल एंड यू हैव दिस मंडपा. मंडप सामने है अलग अलग. यहाँ पे तुम्हारा अर्ध मंडप है एंड देन यू हैव गर्भगृह. ठीक है. नाउ देयर इज अ प्लेस नियर जोधपुर अराउंड 30-35 किलोमीटर्स फ्रॉम जोधपुर कॉल्ड ओसियां. ओसियान इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत टेम्पल्स मिलते हैं उस जमाने के, सैकड़ों टेम्पल्स. कुछ कुछ बचे हैं, कुछ नहीं बचे हैं. सो आई कुडंट गेट मेनी फोटोज, बट स्टिल दिस इज द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ राजस्थानी फीचर्स, जहाँ पे आपको इवोल्यूशन ऑफ राजस्थानी टेम्पल दिखेगा. एक ही जगह दे हैव बिल्ड टेम्पल्स फॉर लॉन्ग टाइम. यू कैन सी द चेंज, फॉर्मेट्स चेंजिंग. दिस इज टिपिकल ओल्ड स्कूल राजस्थान टेम्पल. We won't go much into details. We just look at the names of the places and temples names which are important. MCQ में वही आएगा. Then you have Mount Abu in Rajasthan, Bhilwara temple complex, very famous again. And you have many temples which are made of marble. Here you have Jain temples. So Vimal Vasahi, Luna Vasahi, these two are very important. They are of Adinath and Neminath. Then you have one more temple for Adinath and then Parshvanath. This one that I have showed in photo here is Khadtar Vasahi of Parshvanath. So this is a Parshvanath temple, the fourth one over here. But this is Bhilwara temple complex. See, Jain people in medieval India started building these Jain temple cities. Palitana, Shikharji and many other places. Where on the top of the hill, they will build hundreds of temples. And then they will put bastions around it like fort. And it is like a fort. जिसके अंदर बहुत हजारों सैकड़ों टेम्पल सदियों से बनते आ रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ हिल. तो जैन लोगों की खासियत है ये. इट हैपन्स इन मेडिवल टाइम. ठीक. द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट राजस्थान इज टू, फर्स्टली हाउसएवर टेम्पल प्लान में भी स्क्वायर है जैसे भी है, इनसाइड द महामंडप दे विल हैव एन अरेंजमेंट ऑफ पिलर्स इन सर्कुलर फैशन. दैट इज अ पॉइंट, डिस्टिंक्टिव पॉइंट जो और कहीं नहीं पाया जाता. But more important for us, because of all these things, they do lot of sculptural activity. Sculptural activity, बहुत बारीक काम करेंगे. मतलब आपकी आंखें दंग हो जाएगी ऐसे कैसे कर लिया उन्होंने. आई एम नॉट जोकिंग. विल लुक एट सम फोटोज. पत्थर में तराशा है ये. इस छत अंदर सीलिंग है ये इन मार्बल. कैन यू इमेजिन? आई ऑलवेज थिंक कि लास्ट टाइम आई इवन ही नोज कि इफ आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम डूइंग दिस कार्विंग करते बस आखिरी टुकड़ा बचा है. और बचने वहाँ तक पहुँचते आई स्पेंड 20 years, नॉट ओनली मी बट मेनी पीपल. और आखिरी ठोका मारूंगा, कुछ गलती तो हो गई तो लग गई, फिर 20 साल के एफर्ट्स पानी में. पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट एन ईजी. भक्ति का ये है कि कैसे, लुक एट दिस इन स्टोन. ये जैन टेम्पल्स है, stone and marble. Look at this. Extremely exquisite beauty. Marble allows that, that's one thing, but it is not only marble. भक्ति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और aesthetic vision भी चाहिए. Lacking any of all these 4 things will not help you reach over here. Next temples at Ranakpur, and here also you can see exquisite carving in the entire temple. So in Rajasthan school we have not only temples but lot of other architectural forms as well. One example is this stambha, and the most Jaya Stambha in Chittor. Jaya Stambha, Kirti Stambha दोनों अलग अलग है. There are 2 stambhas in Chittor, Jaya Stambha, Kirti Stambha. I am talking Jaya Stambha here, but still this is not a temple, but various forms of temple were applied to such other structures as well. ठीक है. No, you should know चित्तौड़गढ़ में जय स्तंभ है. That is enough for us to write an MCQ. But कहानी पता है, उसको मेरा कैसे याद रहेगा. Then come to the neighboring state of Gujarat.
हाँ हाँ, गुजरात में we see temple activity in multiple phases like any other region. So we have 6th century onwards temples taking place like in post Gupta, जैसे यहाँ शुरू हुआ था सेंट्रल इंडिया में, यहाँ भी शुरू हो गया. But all these temples generally by Maitrakas who had the capital in Vallabhi. Vallabhi is a city or town in Gujarat which is very important culturally because it is the place जहाँ पे जैन काउंसिल हुई थी, if you remember. हाँ, yes, it is also famous for other reasons. It is an educational center as well. And वहाँ पे वल्लभी काउंसिल एक और हुई थी, वहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी उसका है, बट ठीक है. So Maitrakas, whose capital was Vallabhi, built many temples in the initial phase. We'll see, but they are initial. Then we have a watershed event जब महमूद गजनी इंडिया में आता है, he destroys many temples, and from there we have emergence of real Gujarat style, that is called Solanki style. So it is so fundamental to development of Gujarati architecture that all temples before Solanki are called pre-Solanki temples. We don't call it Maitraka phase or Maitrak phase, we call it pre-Solanki phase. Then we have Solanki phase. And after that, in 13th century, Gujarat is conquered by Sultans of Delhi. In that phase stops, and we have emergence of Indo-Islamic afterwards. Champaner, Pavagadh, we'll see that in Indo-Islamic. Okay. So our primary concern today is to look at this Solanki style architecture, 11th to 13th century. But we'll have a small look at पहले उसका क्या हुआ था, what were the predecessors. So this is a Gop temple in Gujarat. It shows the initial temple. It is looking like Gupta temple of any time, but it has a different kind of shikhara. The shikhara is nothing but very much influenced by Buddhist style. चैत्य के ऊपर जो होता है वो, है ना. So it is the original structure. It is the oldest standing temple in Gujarat, Gop temple, and it is not yet now. It looks like Kashmiri temple, Martanda Verma, Mattan temple जो है, मट्टन पता है, मार्तंड टेम्पल, सूर्य टेम्पल, हाँ, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, उसका जो प्रिमिटिव वर्जन लगता है, ठीक है. एनीवे, सो व्हाट वर द गुजराती डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स. फर्स्टली शिखरा, त्रिरथ और पंचरथ, गर्भगृह with प्रदक्षिणापात. So I am talking about from this level of Gop temple, things get gradually added over centuries, and they are the examples of evolution. In detail we don't need to go and see कौन से temple में कौन सा feature add हुआ था. That is not required to us. I have just given the list in case you require. But through this evolution of 4 or 5 centuries, you have these elements added. Shikhar in a full-blown format. Trirath, Pancharath, you know what it is already. We have Garbhagruha and Pradakshina path, that is Sandhara temple. Closed mandapa is coming up now. Mandapa in front of the temple. Entrance porches are joined, and we have pyramid. Spelling is wrong. Pyramidal roof. Okay. This is one thing. Now come to the actual Solanki style of architecture. And these are the features: elevation, Shikhara, the kings from Bhimdev I till Kumarpal, and the names. We don't need to know the details. I am giving you just for the reference in case you require in future. आपके पास प्रिंट आउट रहना चाहिए इसका, ठीक. It's additional notes. Let us go to the actual concrete examples. You see this kind of shikhar. This is the most characteristic of Gujarati shikhar. It's called Samvarna roof. Samvarna roof. So it is again a new format roof. So हर जगह शिखर अलग अलग बनते जा रहे हैं. This is the latest temple of Somnath, by the way, जो अभी 1950s में बनाया गया है ना, after the initiative taken by सरदार पटेल and K.M. Munshi. ये टेम्पल तो उसका है. तो हियर यू कैन सी कि छज्जा जो थी कक्षासन, दे बिकम नॉर्म नाउ. चलो यहाँ पे बात अलग है, बट दिस इज उरुश्रृंग. व्हेनेवर दे बिल्ड टेम्पल, दे टेक केयर ऑफ ऑल दिस फॉर्म्स. ऐसे अचानक से मंदिर नहीं बनता है. इफ यू विजिट अक्षरधाम इन दिल्ली, आफ्टर वी आर ओवर विद टेम्पल आर्किटेक्चर, प्लीज गो एंड विजिट अक्षरधाम वंस. यू विल आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स. अच्छा यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो, वहाँ पे ये, खुश हो जाओगे अंदर से बड़ा. बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड कल्चरली टू अप्रिशिएट द ब्यूटी. ठीक है, आई एम वेरी ब्लंट, वेरी सॉरी. लेट मी फिनिश द कोर्स, देन यू गो एंड देन यू बी अप्रिशिएट. ठीक है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्टिंक्टिव रूफ इन वेस्टर्न इंडिया. नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल, मोढेरा का सूर्य मंदिर. राइट, इट इज सो फेमस दैट इट इज ऑल्सो एन इंडियन नोट ऑफ 100 रुपीज. राइट, नहीं ये नहीं है. अच्छा, 100 नोट पे ये है अपना रानी की वाव है. सॉरी 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 सॉरी.
right? So this is the temple. One temple, see, in South India generally a temple is required to have a tank. In North it is not mandatory, but you still find water tank somewhere, क्योंकि टेम्पल इज अ सोशल स्पेस, तो पानी करके पवित्र वो तो सब रिलीजियस एंगल है ही, बट बिकॉज पीपल कम एंड कॉन्ग्रीगेट देयर, तो कई बार तो यू कैन सी इवन सच लेवल की जहाँ पे कुआं बनता है वहाँ आप छोटा मंदिर बना लेते हो, तो टैंक के अंदर मंदिर है, मंदिर का टैंक, कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो इट इज़ कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स, कुंड, तालाब, पुष्करिणी, वॉट एवर. So this is the Modhera Surya Mandir. It is also on a structure format platform. You have main temple, you have other structures, and then you have this, and you have Toran over here. ठीक है. So संधार प्लान, हाई प्लेटफॉर्म, उसके गर्भ मंडप, गुड़ मंडप, सभा मंडप, कीर्तितोरण, कुंड. सो गर्भ मंडप, गुड़ मंडप, सभा मंडप, कीर्तितोरण एंड कुंड, 5 फॉर्मेट इसमें है. नहीं कुछ नहीं समझे, सुन नहीं बात. No, it's not a new thing that is being added. I am just mentioning it right now. In many temples you see kund is there. In many temples. The interesting thing about Western India is कुंड के यहाँ जाने की जो सीढ़ियाँ होती है ना, they are architecture in themselves. जहाँ पे there is not much availability of water, थोड़ा भी arid region आता है, starting from Delhi, Rajasthan, Gujarat, some part of Maharashtra, you have tradition of having big wells, and then you have stairs going down. In that you create architecture, step wells. You know step wells, रानी की वाव तो है ही. आपने वो मूवी देखी पीके, पीके देखी है जाके, अग्रसेन की बावड़ी वाव, वो तो फिर ये परंपरा है कि पानी का. सी इंडिया में और एक चीज़ है कि सोशल एंगल ऐसा होता है कि वेर कॉन्ग्रीगेट, इट्स अ पब्लिक स्पेस, लेट अस ब्यूटिफाइड. तो हर चीज़ को सुंदर बना के छोड़ देंगे. जहाँ और गुजराती और राजस्थान लोग तो बस सुंदर नहीं बनाएंगे, वहाँ तो मूर्ति बनाएंगे छोटी छोटी. अरे ब्लैंक स्पेस, नो चलो मूर्ति बनाते हैं. तो यू विल फाइंड इन ओडिशा फॉर एग्जांपल, आई हैव मेंशन इट लेटर ऑन, कि देयर इज ट्रेडिशन कि मंदिर के अंदर का पार्ट जो है, इंटीरियर ऑफ द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स आर ब्लैंक, दे आर सपोज टू रिमेन ब्लैंक. एंड ओडिशा कैरीज द ट्रेडिशन ऑफ ओरिजिनल नागर स्टाइल टू द फुलर एक्सटेंट कंपेयर्ड टू एनी अदर रीजन. गुजरात, राजस्थान, MP, वॉट एवर, दे डोंट फॉलो ओरिजिनल नागर एज मच एज ओडिशा डज. अंदर के दीवार पर नहीं बनाते कुछ, बट इफ यू गो टू राजस्थान, गुजरात, ठक 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 शुरू. इसमें उड़ीसा का जो टेंपल है, रघुनाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी टेम्पल, यस. That style is different from other Bengal style. We'll discuss that. We'll see the photo. ठीक है. So again, the pillars are very much carved. You can see they will leave no possible space blank without carving. But there is one interesting thing here. The stone is such that it is not carved with छिन्नी हथौड़ा. It is abrased. घिस के बनाया उसको. ठीक है. अब्रेजन रादर देन कटिंग. स्टोन इज नॉट कट, इट इज अब्रेज. तो ये और भी ज़्यादा दिक्कत वाला, स्किल वाला काम है. ठीक है. सो समय है, करो. सो यू हैव सम टेम्पल्स दैट वर बिल्ट आफ्टर दिस मोढेरा का सूर्य मंदिर वॉज बिल्ट. आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स. सो यू कैन सी दिस कक्षास एंड छज्जास आर नाउ बिकमिंग वेरी प्रोमिनेंट, एंड साइड की वॉल्स ही चली गई पूरी. The walls are there only around गर्भगृह and not around मंडपा. ठीक है. अब ओपन मंदिर हो गया थोड़ा सा. And it is not only for air and light. Okay. इस तरह के मंदिर बनाना is much more difficult than the temple with walls. So it is architecturally भी challenging होता है. Then you have this Navlakha temple in Ghumli. Again 2-story mandapa you have. And Urushrunga platform. Yes. These are made of different stones, like colors. नहीं एक ही स्टोन है एक्चुअली, वो थोड़ा रंग ऐसे धूप के जैसे हो गया है. ठीक है. तो स्टेयर्स होती होंगी लेवल पे जाने के लिए? हाँ सामने से स्टेयर, दिस इज फ्रॉम बैक साइड. ऑब्वियसली मंडप तो सामने आएगा ना, तो यहाँ से ऊपर आओगे, यहाँ कुछ मंदिर का होगा, फिर सामने एंट्री होगी. तो फोटो इज फ्रॉम बैक साइड. देन यू हैव गिरनार, जूनागढ़. And Vastupal and Tejpal were two people who were very important. Jain people थे. They were the
हेल्पिंग द किंग एट दैट टाइम, तो उनका बहुत पावर था एंड दे हैड लॉट ऑफ मनी, सो दे पैट्रोनाइज्ड मेनी टेम्पल्स. तो वस्तुपाल एंड तेजपाल टेम्पल आपको आज भी मिलेंगे इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एज वेल एज इन गुजरात. दिस इज वन एग्जाम्पल, ओल्ड फोटो एंड न्यू फोटो. यू कैन सी दैट शिखर ऑफ दैट टाइप. ठीक है, यू कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स. Again, these Solankis did not build only temples. Likewise in Rajasthan, they built many other forms of architecture as well. We'll see 3 or 4 of them. One is Toranas. Now this is a Kirti Toran of Vadnagar. Why do we know Vadnagar? मोदी जी का गांव है, ठीक है. But for history, although that has also become history now, still in history Vadnagar is known as a Buddhist place. बुद्धों की वहाँ मोनेस्ट्री थी बहुत बड़ी ज़माने में. एंड वी हैव अ कीर्ति तोरण. सो यू हैव वेरियस तोरणास across Gujarat, Rajasthan, MP. In MP you have Gyaraspur and a very beautiful toran of Gyaraspur as well. So this toran. Then you have these gateways of cities. तो नहीं छोड़ेंगे, सब जगह हम तराश कर रख देंगे. तो शहर के जाने की एंट्री के दरवाजे हैं, वहाँ पे देखो सब जगह बारीक बारीक काम. ठीक है. सो सिटी गेट्स in Ahmedabad, if you visit, will see Ahmedabad next day, in 2-3 days. In the city, Ahmedabad is the UNESCO World Heritage City, right? Old city. और उसके अंदर बहुत सारे गेटवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. दे कम फ्रॉम लेटर एरा, बट स्टिल अहमदाबाद वॉज नॉट फाउंडेड येट, अहमदाबाद में बनेगी. वी हैव दिस गेटवेज ऑफ एंटरिंग सिटी विच आर रिचली कार्व्ड. इट इज अ दाभोई प्लेस कॉल्ड दाभोई. सो आई फाउंड दिस फोटो, यहाँ पे छोटा सा स्कल्पचर है, 2 हाथी झगड़ा कर रहे हैं. एज आई सेड, इन इंडियन लोटस, एलिफेंट एंड अश्व, घोड़ा, हॉर्स, यू विल फाइंड देम कार्व्ड वेरी रिचली, स्पेशली एलिफेंट एंड घोड़ा. सब जगह आपको बहुत सुंदर मिलेगा. सो व्हेन यू सी दिस फोटो, व्हाट कम्स टू योर माइंड इमीडिएटली? हाँ, इन मेघदूतम आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीय ददर्श. तो आषाढ़ के पहले दिन ऐसे बादल आते हैं, टकराते हैं दूसरे से, ऐसा लगता है कि 2 हाथी टकरा रहे हैं, बारिश होने वाली है. आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम, 2 मेघ दूसरे को सानुम कर रहे हैं, आश्लिष्ट में. सानुम जैसे लगता है, आश्लिष्टम, आश्लिष्टम सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीय ददर्श. लगता है 2 हाथी झगड़ा कर रहे हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है, प्रेक्षणीय ददर्श. तो एनीवे दाभोई फोर्ट में है ये. देन थर्ड पार्ट इज लाइक स्लूस, टैंक्स, वेल्स एंड कंडुइट. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ दैट एरा. खान सरोवर टैंक इन पाटन. पाटन वॉज द कैपिटल ऑफ सोलंकीज. एट दैट टाइम इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अनिलवाड़ा, 11th to 13th century. So we have various such sluice gates and sluices with structures. And then finally you have this stepwell, रानी की वाव, रानी उदयमती. ठीक है. और इस 7 लेवल्स नीचे तक जाती है. ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू इट्स ज्योमेट्री, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सोशल स्पेस, गाना, कल्चर वाला, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज वेरी मच, दैट इज टू मच फॉर अस. ठीक है. बट वन कैन गिव अ लेक्चर ऑन दिस स्ट्रक्चर फॉर हाफ एन आवर वेरी इजीली. जमीन के अंदर नहीं, हाँ हाँ, अंदर है नहीं. पूरा दिस इज जमीन, पूरा अंदर बनाया है, उल्टा है. जैसे कि आप महल बनाओ, उसको फ्लिप कर दो जमीन के अंदर. ठीक है. तो कुछ दिन तो गुजरात में देखा है ना, कुआं ऊंचा होता है, नहीं देखा था, गहरा पहली बार देखा. नहीं, कुआं गहरा होता है सुना था, कुआं ऊंचा पहली बार देखा, उल्टा बोलता है वो. तो दीज आर 7 लेवल्स एंड एवरीवेयर वी हैव पिलर्स एंड एकदम सब जगह देखो स्कल्पचर बना हुआ है लाइक दिस. सब जगह बना के छोड़ेंगे स्कल्पचर्स. एंड यू कैन इवन आइडेंटिफाई द पीपल. मदनिकास कौन है, अलस कन्या कौन है, सुरा सुंदरी कौन है, यू कैन आइडेंटिफाई देम. नायिकास एंड सुंदरीज एंड मदनिकास, दीज आर टिपिकल टाइपोग्राफ्स इन इंडियन स्कल्पचरल. एनीवे, come to Odisha, the 4th part, the most remarkable phase of North Indian temples, and to a certain extent it represents a pure form of original Nagara style compared to other parts or other regions. And this phase is from 7th century to 13th century. ठीक है. Now इसमें और एक चीज़ है, एंड दैट इज कि इसके पीछे एक रिलीजियस पॉलिटिकल स्टोरी भी है, एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट.
In Odisha, you have Puri ka Jagannath, very famous temple. Jagannath is Vaishnav. We have Konark ka Surya Mandir, Surya Bhagwan. And we have in Bhubaneswar only one of the most important temples, Lingaraj. Lingaraj, Shankar, Shaiva. Shaiva, Vaishnav and Surya. तो क्या चेंज हो रहा था कि ऐसे भगवान एक साथ आसपास बन रहे हैं विथ ह्यूज रॉयल पैट्रोनेज एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन. स्टोरी कैसे इवॉल्व होता है वो, वी आर नॉट गोइंग टू दैट, हम बस स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे. सो इट जस्ट अ थिंग दैट specific thing about Odisha is that you can do in detail study of Odisha very easily architecture wise because of many other reasons. Firstly, in Bhubaneswar city only, it is called city of temples. We have hundreds of temples still existing. You can see the evolution gradually in the same city. Secondly, there is a tradition of temple manuscripts which are preserved in Odisha in all the major temples. For centuries after century, we have manuscripts that are available that talk in detail about what happened, how to do puja, who came, who gave patronage. So we have these diaries of temples, of ritual forms, of kings, etc. All things are mentioned there. They contain traditional terms and history. For example, in Jagannath Puri, Madan Panji, वहाँ पे सब रिचुअल दिए जो 1000 साल से 700 साल से हो रहे सब आपको मिलता है वहाँ पे. Everything written down that is available. And thirdly, tradition is still alive. Sthapati जो थे, original craftsmen and architects and engineers, the families are still there. And they are passing that knowledge from generation to generation. So oral tradition, written tradition and physical tradition, तीनों आपके पास. So it is easier to study in the traditional notion, the Odisha architecture. It has its own terms again like any other region. We have plan, elevation and shikharas. We don't need to go into detail, but understand that in Odisha we have different terms. It is called a Rekha Deul and Pidha Deul. तो रेखा देउल इज मेन, यहाँ पे जो आपका श्राइन होगा, सैंक्टम सैंक्टोरियम गर्भगृह होगा और ऊपर का, इट इज रेखा देउल. एंड जो मंडप और एनी अदर पार्ट एंड उसका अलग स्ट्रक्चर होगा, इट इज कॉल्ड पिढ़ा देउल. ठीक है, यहाँ के लोकल क्योंकि टेक्स्ट अवेलेबल है, सो वी नो द नेम्स दैट दे यूज ट्रेडिशनली, राइट. देन इंटीरियर ऑफ बोथ इज स्क्वायर, तो स्क्वायर फॉर्मेट में ही होगा. थर्ड, बिगर टेम्पल्स हैव एडिशनल रूम्स अपार्ट फ्रॉम रेखा एंड पिढ़ा. And they are Natya Mandap, Bhoga Mandap, etc. We already know what they are. It's about plan. Come to elevation. Elevation is 4 or 5 parts. You have Pista, Bada, Gandi, Mastak. So this is Pista, Jagati in central India. This Bada is wall. Gandi is this part. ये Mastak. ठीक है. So elevation का अंदर terms उनके हैं. And sculptural activity, profusion on exterior, minimal in interior. That is again खासियत of Odisha style. Finally, you have shikharas, and you have various types of shikharas. We will see them. Come next. Rekha Deul, Pidha Deul, and there is third part called Khakhara Deul. Khakhara Deul. So you have Rekha Deul, Pidha Deul, and Khakhara Deul. I have put the comparison over here. Don't need to go into details. है यहाँ पे printed में है ना ये? Okay, ठीक. Go ahead. So let us look at the examples. As I say, Bhubaneswar is the city of temples. Then you have one of the oldest, not the oldest, one of the oldest temple is this Vaitala Deul. Deul is mandir, ठीक है, Deula. So this is the format. We have this Vallabhi kind of thing over here. Look at the shikhar, Khakhara Deul. From here you go to here. This is the most important temple in the history of Odishan architecture called Mukteshwar. Everything that is characteristic of Odisha style of architecture comes to its being in this temple for the first time in a harmonious way. So it's a beautiful little temple, and fully blown Odisha structure is now ready. From here to here again took many centuries. So then we will see some 3 important temples. The great Lingaraja temple. I don't go into history. We don't need to go into history. You can see the shikhar, different shikhar, different shikhar. Rekha Deul, Pidha Deul. यहाँ से एंट्री करोगे आगे, ठीक है. Then you have this temple. UPSC has asked this question in the past, like 1990s. You see old questions. This temple appears 2-3 times. One of the options. Which of the following temples in Odisha? Type questions they come. So Raja Rani temple is also in Bhubaneswar. It's an important historic temple in Odisha. That much is enough for us. Don't need to go into stories. Then Jagannath Puri temple. You can see various Pidha Deulas and then Jagannath. Are sadly, otherwise there is a very interesting and rich story of all these things.
2 घंटे लगेंगे यार, सब नहीं पॉसिबल नहीं, ऐसे नहीं होता सर। ठीक है, एंड दिस इज अगेन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अबुल फजल सेड अबाउट दिस टेम्पल बाय द वे। अबुल फजल पता है आपको? द compatriot ऑफ बादशाह अकबर, द वन हु रोट आईन अकबरी, विच इज अ थर्ड पार्ट ऑफ अकबरनामा। So Akbarnama has 3 volumes. The third volume is called Ain Akbari, which is historically more important than earlier 2 volumes. So we have Abul Fazl. Even those whose judgment is very critical and who are difficult to please stand astonished at its sight. इतना सुंदर है. It is also called as Black Pagoda. ठीक है, समुद्र किनारे है ये, तो एक ज़माने में ये बहुत ऊंचा है, तो इट यूज टू बी वेरी विजिबल फ्रॉम द सी। तो जो समुद्र से जहाज आते थे, दे यूज टू फाइंड इट अच्छा, दे यूज टू यूज इट एट लोकेशन, तो ब्लैक पैगोडा है। नाउ दिस इज रेखा देउल, पिढ़ा देउल वाला जगमोहन जो है यहाँ पे, वो टूट चुका है, वो है नहीं। इफ़ यू गो इनसाइड यू कांट गो इनसाइड, क्योंकि अंदर से टूटने वाला था अंग्रेज ज़माने में, तो इट इज़ नो कम्प्लीटली फिल्ड विथ स्टोन एंड एवरीथिंग, सो यू कांट गो इनसाइड। सब अंदर से बंद है, सब सॉलिड भर चुका है अंदर। यू कैन जस्ट लुक एट फ्रॉम द आउटसाइड एंड जस्ट रोम अराउंड एंड कम बैक। बहुत सुंदर है। वहाँ पे लोग कुछ भी, मतलब डोंट गो देयर एंड गो देयर बट डोंट टेक ए लोकल गाइड, वो कुछ भी कहानी बताते रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अभी क्यों गिरा था, भूकंप आया था, क्या आया था पता नहीं, लेकिन गिरा हुआ था। दिस इज अ फोटो फ्रॉम लिथोग्राफी ऑफ जेम्स फर्ग्यूसन। जेम्स फर्ग्यूसन हैज़ रिटन 2 volumes on history of Indian architecture about 150 to 200 years ago, and this is the basic from which we see modern history of architecture coming up in India. तो आज भी किसी को भी पढ़ने हैं कोई हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर एंड वन इज ए सीरियस रीडर, ही वुड गो बैक टू जेम्स फर्ग्यूसन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज और हर लाइफ। मैंने अभी तक नहीं खरीदा है वॉल्यूम, दोनों खरीदेंगे कभी तो। ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी ओल्ड हिस्ट्री, बट ही एट दैट टाइम वेंट अक्रॉस इंडिया, ड्रॉ मेनी मैप्स, फिगर्स एंड पुट देम एवरीथिंग टुगेदर, गेव अ नरेटिव इंटायर स्टोरी फॉर इंडियन आर्किटेक्चर। तो ठीक है, यहाँ पर कोई सिपाही खड़ा है वहाँ पे उस जमाने में, इंडियन स्टाइल। This is another photo from back side. It is very famous for Jagati. We have this. It is stone temple is Ratha. रथ की तरह है, तो रथ के पहिए भी है, एंड यार काला चक्रास। तो यू हैव वेरियस इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस रथास। उसके अंदर भी यहाँ आपको स्कल्पचर मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो अ टाइम वाला थिंग। सो सूरज के छाव जहाँ पड़ती है, तो यू कैन काउंट अ टाइम, दिन का कितने बजे है, बेस्ड ऑन कहाँ छाव पड़ी है, वो सब चीज़ें इसमें है। ठीक है, दिस इज द एंट्री। अब यहाँ पे नीचे कौन सा जानवर है, ऊपर कौन सा जानवर है, तो पहले बुद्धिज़्म था, बाद में वो सब चीज़ें हैं, लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ ऑल द स्कल्पचर्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। दिस थिंग आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे एक जगह एलिफेंट है, कोई बैठा है, पेड़ है, एंड यू सी सम पीपल ब्रिंगिंग जिराफ इन उड़ीसा। जिराफ कम्स फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। ठीक है, सो trade relation, Kalinga was a trading country, maybe in Myanmar, Southeast Asia, Africa. Kalingan merchants went everywhere. आजकल लोग भूल गए उसे कि कलिंगा was one of the most important trading part of India. If you go on Kalingan shore, you have a tradition called Bali Jatra. पता है बलि जत्रा? तो BALI बलि जत्रा, इट्स लाइक किसी का बलि चढ़ा रहे हैं, ऐसे लगता है। तो उसमें होता है कि औरतें जो होती है घर की, समुद्र किनारे जाती है, एक दिया होता है, स्मॉल लाइट और लैंटर्न, एंड दे पुट इट इन द ओशन एंड देन इट गोज अवे। सो एक्चुअली इट इज़ नॉट किसी का बलि चढ़ाया, ये बाली जत्रा है। बाली इज इन इंडोनेशिया, क्योंकि हस्बैंड्स जो होते थे, दे यूज टू गो ऑन जर्नी फॉर ट्रेडिंग फॉर लॉन्ग डेज एंड दे यूज टू कम बैक आफ्टर मंथ्स एंड ईयर्स। तो उनके पीछे औरतें पूजा करती, मेरा पति गया है। तो उड़ीसा में बाली जत्रा इज अ बिग थिंग स्टिल टुडे। दैट शोज कि भाई ट्रेडिंग नेशन है, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी है। तो बंगाल, कम टू द लास्ट, सेकंड लास्ट में बंगाल। बंगाल इज नोन फॉर सच काइंड ऑफ रूफ। ठीक है, दिस इज अ लोकल हट रूफ दैट इज फेमस अक्रॉस बंगाल इवन एट दैट टाइम। सो दिस इज समथिंग दैट वाज कॉपीड इनटू द आर्किटेक्चर। ठीक है, सो बंगाली आर्किटेक्चर कैन बी डिवाइडेड इन मल्टीपल वेज। वन वे इज चाला। चाला इज वो छत जो है वो चाला है। वी हैव 2 चाला, दिस इज 2 चाला, विल सी द फोटोज। 4 चाला, 8 चाला, 12 चाला, आई विल शो द फोटोज। एंड दिस इज जोड़ना, जोड़ बंगला, 2 साथ में है तो जुड़ा हुआ है, जोड़ बंगला। एंड वी हैव जोड़ बंगला जो सेंट्रल स्ट्रक्चर बीच में है।
So these are basic terms that are used in Bengal. We'll see them. The other way is Ratna. Ek Ratna, Pancharatna, Navaratna, etc. It means that on one roof there is only one pinnacle. Then you have Pancharatna mein on one central, and then on the four corners you have 4 Ratnas. So Pancharatna, and likewise. You have till 25 Ratnas, so it gets complicated more and more. ठीक है. All of these are Charchala. Charchala. So you have each Ratna has its chalas, sloping roofs. ठीक है. So you have chalas and Ratnas. And there are many other ways, but these are primary ways. Let us study them one. This is from Jharkhand, Maruti temple. Again, you can see Charchala very easily over here. Very simple temple. They are in brick. In that part of India, you don't find stone very easily. So brick or terracotta is used. You have this temple in Vishnupur. You have Charchala and Ek Ratna. ठीक है. And this is used in brick. So brick, the way it is made is that it is constructed, but it is not carved. What do they do is, on the other end, after or aside of the temple, they get soil, and from that they create terracotta sculptures, and that is used as tile, और a tile लगाते ऊपर सारे ऐसे. So एक तो टेराकोटा है तो ज़्यादा चलेगा नहीं, पत्थर का सदियों चलता है. ये 200 300 400 साल में कहीं ना कहीं टूट जाएगा, गिर जाएगा, बारिश आएगी, कुछ ना कुछ होगा. ऐसे बारिश तो बहुत होती है वहाँ पे, झड़ जाएगा. Then what you do is you just put new panel on front of it. So it is very difficult to find very old structures in Bengal and Assam. You can go back 500, 700, 800 years, not more than that maximum, because most of the temples are repaired again and again. इनका सब कुछ पता है कि इस टाइप का टेम्पल आर्किटेक्चर किसने पैटर्नाइज किया था? हाँ, सब कुछ पता है. पाला के बाद पाला है, सेना है, बहुत लोग आए. इस टाइप का किसने सबने किया है. पाला में जनरली बुद्धिस्ट, सेना वेयर नॉट बुद्धिस्ट, तो वहाँ से शुरू होता है खास करके. Then you have, but I am talking about this is not 10 kilo, this is by 14th 15th century by the way. हम थोड़ा आगे आ चुके हैं. ठीक है. ये केस्टोराय कृष्ण भगवान, केस्टोराय टेम्पल. अगेन जोड़ बंगला है, सेंट्रल पिनाकल है, एंड ईच पार्ट ऑफ जोड़ बंगला इज 2 ताल. बस 2 तरफ छत है उसके, 4 तरफ नहीं है. दिस वॉज 4 ताल, दिस 2 ताल, लेकिन ऊपर का 4 ताल है. 2 ताल जोड़ बंगला, 4 ताल का ऊपर. ठीक है. And again you can see the terracotta panels everywhere. This is typical of Bengal. You will see when Mughal architecture evolves, Mughals absorb this structure. Bengal roof. In all across India, then after you will see that Bengal roof is becoming popular in Mughal time, because that Mughals tried to syncretism of India. सब जगह से एक ही उठा लिया उन्होंने. ठीक है. शामराय टेम्पल, अगेन पंचरत्न, एक बीच में है, 4 साइड में. You have this temple in Bangladesh, Kantaji temple, very famous, दिनाजपुर में. You can see कितने रत्न यहाँ पे, 4 4 8 और एक 9 रत्न है, एंड 4 चाल. This is the sculpture I am talking about. उसके ऊपर ऐसे बना रहेगा. It doesn't appear very beautiful right now in the first gaze because हमें आदत नहीं है उसकी, but it is a Bengali type of beauty. It's in terracotta panels लगाए हैं ऊपर. This is the famous Kali temple in Kolkata. Why is it famous? ये मंडपा टेम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Why is it famous? Because Ramakrishna Paramahansa used to sit here. Ramakrishna Paramahansa is the guru of स्वामी विवेकानंद. तो उनको यहाँ बैठते थे, उनको यहाँ पे ये काली मंदिर, वो काली मंदिर है जो उनका काली मंदिर था. दिस इज द वन. यस, दक्षिणेश्वर मंदिर. Oh, you have not been to Kolkata? I have been to Kolkata. ठीक है. And this is a typical Bengali hut and structure in which we have roof. From where we have the word bungalow. बंगला बना, एक बंगला बने न्यारा. That is nothing Bengal, क्योंकि that initially in British time copied the Bengali structure of local settlements. So bungalows word come from Bengal. ठीक है. It is anglicized version of that local structure. लेकिन this is residential, this is not religious. ठीक है. Come to the last part, hills. I won't go much into hills because not required, and there is again entire history of Kashmir. ठीक है. तो अगेन neglected region, यहाँ भी neglect करेंगे उसको थोड़ा सा.
है ना, टेलिंग sarcastically. But you have this temple in Kulu, Panchayatan temple on fourth side. You can see the roof looking similar, but the typical roof in hills is like this because of the climate. बर्फ गिरेगा, निकलना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, ठीक है. So Chaurasi temple in Chamba. So Chamba and Kulu, both of them have lot of temples of original style. That is one thing. And this is in Srinagar. Here you see influence of Gandhar as well. So well preserved example of Kashmir architecture from 8th century, Pandrethan. And then trefoiled arches derived from Gandhar. So you have these trefoiled arches, 1, 2, 3. Here 1, 2, 3. Then you have triangular gables. So this is 4 side, then coming out of this triangular gable. So this is triangular gable. Again a Syrian western influence. This Kashmir has always been at the crossroads of trade. हमें लगता है कि कश्मीर इतना दूर अंदर वैली में कुछ नहीं. It has always been open to trade for centuries. वहाँ पे सदियों से लोग यहाँ से आए, वहाँ से आए, चलते गए. Sometimes close किया गया, तब बात अलग है, for a few decades here and there. But Kashmir has been very much heart of the global trade. So whenever you see any new thought coming, Kashmir becomes its center. May it be Shaivism, may it be Buddhism, may it be Islam का समय बाद में कुछ Sufism, many things Kashmir has had huge contributions. But anyway, Kashmir architecture in Trans-Himalayas. This is the most famous Martanda Sun Temple, Mattan Temple. Now Martanda is called Mattan now. और ये किसलिए फेमस था, यहाँ पे कौन सा गाना शूट किया था? बिस्मिल बिस्मिल. You don't know song बिस्मिल? Go and Google it. ठीक है, हैदर मूवी, बहुत हवा होता है उसमें. हाउ कैन यू बिस्मिल इज डेविल, तो उसको भगवान के सामने कैसे गाना आपने शूट कर लिया वगैरह. कश्मीर वैली, ठीक है. सो मार्तंड सन टेम्पल. वी हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री, ललितादित्य, मुक्तापीठ एक्सेट्रा. वी विल नॉट गो इन दैट हिस्ट्री, लेकिन जस्ट टू हैव एन आइडिया कि टेम्पल्स कैसे होते थे. दैट्स ऑल. विल स्टॉप हियर. थैंक यू.